Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that Nifty has made a new all-time high level at 20,008, and we are now close almost at the day's high, 19,996.35 level. So if I look at the chart pattern, I'm extremely bullish and positive. I believe this extension of this move will be there. 20,200 is the immediate level, as we said in the start of the week. So 20,200 should be the first level to see on the Nifty 50, and then gradually I think this level should increase towards the 20,500, level. On the way down, 19,500 is the immediate support. 19,500, 19,600, this would be the lower side range, and major support will come at 19,200. So as long as 19,200 level is not broken, the directionally the trend will never change. Decline should be viewed as a buying opportunity anywhere close to 19,700, 19,600. If this correction do come, then there is this should be viewed as a buying opportunity, because this entire series for the month of September can trade with positive bias, is what we believe. Coming to Bank Nifty was marginally up with the Nifty. Even the Bank Nifty has moved up, but then it is still underperforming the Nifty. The Bank Nifty is, as long as Bank Nifty is trading above 45,000, even the structurally the trend and momentum is positive in Bank Nifty. Right now, we are speaking of all-time high level for the Bank Nifty, which is close to 46,300. That to be retested first. So once it retest and we uh, observe the close over that, then we figure out the further directional trend. Overall, the bias is still positive, strongly positive. So in yesterday's session, we saw that metals is one sector which has given a kind of range and volume breakout. So I think stocks like Hindalco and Tata Steel will be in focus. So positive bias will be there. Only on a cautious note, this media stocks is looking slightly overheated, specifically PVR. So some profit booking at the current level cannot be ruled out. So slight cautious on the PVR. Coming to derivatives outlook, so there was a long build-up in the Nifty futures to the tune of 0.68%. The PCR has now jumped from 1.38 to 1.47, so that is positive. The call writing was seen at 20,000 and 20,100 levels, so that will be the resistance, and put writing at 19,900 and 19,800, so that will be the support. Bank Nifty, so in Bank Nifty, there was a short covering to the tune of 2.49%. And the put call ratio has also gained from 1.27 to 1.39. The call writing was seen at 45,600 and 45,800. So that should be the resistance. And 45,500 and 45,300 put writing. So that should act as a support. Secondly, there are few stocks which are looking very strong on charts, like Canara Bank. The decline should be viewed as a buying opportunity. There were momentum seen in the HDFC Bank and ICICI Proof. So I think again the corrections in this particular stock should be viewed as a buying opportunity. Godrej CP is one counter which is again given a technical breakout, so that should be kept on a watch list. Overall, the bias is positive. Even the FI and the index future have gone long close to 8,000 contract. They are overall long by 35,000 contract, and the long short ratio is 60% right now. So even as I said earlier, even the FI data in the index future is long, so even that is adding to this trend. Net, the bias is positive. Any decline during this week or maybe next week should be viewed as a buying opportunity. So that's the technical view. I'll hand over to Devang sir for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh sir. Good morning all. So couple of fundamental news from my end. First is on ICICI Bank. So the RBI has approved through a letter dated September 11, 2023, the reappointment of Mr. Sandeep Bakshi as the MD and CEO of the bank with effect from October 4, 2023 till 2026. At the annual general meeting held on 30th August 2023, the shareholders also approved appointment of Mr. Bakshi, and this bodes well for ICICI Bank. It brings stability to the management. In steel sector, India has imposed an anti-dumping duty on Chinese steel for 5 years during April to July. China was the second biggest steel exporter to India after South Korea.
selling 0.6 million ton, up 62% YOY. In all, India imported 2 million tons of finished steel in the period, the highest since 2023 and up 23% YOY. So this bodes well for steel companies in India. For railway sector, railway stocks has seen a sharp up move from past few days. This is mainly due to new economic corridor between India, Gulf, European countries. The route will be developed under leadership of US and funding will be done by G7 nations. Positively is been strong. Positivity is strong among Indian railways. Stocks as addressable market expand for them. But yes, projects will be awarded on bidding basis, and this could take years to fructify. Currently under DPR work will start. As per government releases, there will be two corridors. There will be railways and sea route, and track will also have hydrogen pipes, optic fiber network, and electricity lines. MOU is signed, and 8 entities to MOU will meet in 60 days to develop and commit to a action plan with relevant timelines. So overall, positive news for railway sector. For cement, the cement companies in East India has announced a price hike of 35 per bag starting September 11th after taking a hike in the first week of the month. East-based cement companies like Nuvoco and Dalmia may benefit from the hike. For Reliance Industries, KKR will invest 2069.5 crores. The company's subsidiary, Reliance Retail Ventures, increasing its stake by 1.42% from 1.17%. So the deal values the retail giant at 8.36 lakh crores. So this is positive for Reliance. Larsen and Toubro has increased its buyback price from 3,000 to 3,200. So while the number of shares has been reduced, so this is positive for Larsen and Toubro. For Lupin, the drug maker plans to enter into a business transfer agreement with subsidiary Lupin Manufacturing Solution to carve out active pharmaceutical ingredients manufacturing sites at Tabasha and Visakhapatnam, and select R&D operations, including fermentation at Lupin Research Park, Pune. The consideration is expected to be received is rupees 750 to 850 crores, and the deal is likely to be entered in October 2023. So this bodes well for Lupin. That's it from my end. Over to you, Shantanu. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. So we'll start with some further updates. First out of which is based on Bajaj Finance, where according to Mr. Sanjeev Bajaj, who is the chairman and managing director of Bajaj Finserv, said that the NBFC is planning to offer car loans, tractor, and microfinance loans in the next few years due to the bright growth prospects of the Indian credit market. So this should be a positive update for Bajaj Finance. Next update is on Hindalco, where the company in an exchange filing said that its subsidiary Novelis had entered into a long-term agreement to supply aluminum beverage can sheets to North America-based Ball Corporation in the early 2023. Talking about Power Grid Corporation, the company has won an order to set up a 20 gigawatt interstate power transmission project in Rajasthan. The stock will also trade ex bonus today. It had declared bonus shares in the 1:3 ratio earlier. Next update is on IDFC First Bank, where on Monday, GQG Partners acquired its 50.7 million shares from MD and CEO Mr. V. Vaidyanathan via a block deal. The latter will use the part of the deal's proceeds to subscribe to the bank's fresh shares by exercising stock options. Final update is on Tata Consumer, where the Tata Group FMCG firm is planning a new product launch in the pantry segment. The products will include pulses, spices, staples, dry fruits, and ready to cook products. So, this was all from my side. Now, I'll hand it over to Prabhakar sir for further updates. Good morning, team. Market has made an all-time high. Whenever market makes an all-time high, everybody cautions about euphoria. So, but there will be stocks and sectors which will outperform the market. So here, as market is moving higher, AMC stock, companies which are holding mutual fund, they will be in action. So HDFC AMC, UTI AMC,
and NAM India are few stocks which will give good returns from here also. And no, even Devang was talking about ICICI, Mr. Sandeep Bakshi reappointed as CEO and MD of ICICI Bank. And Anup Bakshi is the ICICI Pru Life CEO. So that will maintain continuity. And he is called a brother of the bank CEO. So I think ICICI Pru Life can give you 10 to 15% return from current level. Even HDFC Life is looking good. SBI Life also is looking good. So I think this might have some rub-off effect on all the three life insurance stock. ITI is set to make its mark in world of computer with launch of its own brand laptops and microcomputer in collaboration with Intel in a brand called Smash. So yesterday ITI was in the upper freeze, almost good gains were seen there. So this is very positive. Power Grid declared a successful bidder for Rajasthan project on build, own, operate, transfer to establish interstate transmission system project for evacuation of power from REZ in Rajasthan, 20 gigawatt of power. Now we are positive on power stock. JSW Energy, Tata Power, they have already done well, but Tata Power still has a lot of headroom to rally. Even NTPC is one stock which still looks good. So these are few things which can do very well. DFC approves provision up to 425 million in Tata Power Arm TP Solar Greenfield, 4.3 gigawatt of solar cell. So again, power sector is something which will be in focus. Bharat Forge has said they are in talks with 10 to 12 countries for defense export. This is what CMD Baba Kalyani said, and it is quoted in Business Line. So Pharma faces antitrust lawsuit in US. So stock was down yesterday 5%. Lupin has said it will transfer few businesses to Lupin Manufacturing Solution Limited. It will be a wholly owned subsidiary, but it has a lot of process. They say by 31st December 2023 it will be done, and the total value net worth of the deal will be 611 crores, where two API manufacturing site, Visakhapatnam and Dapsa, will be, and few R&D will be given, including fermentation at Lupin Pune will be demerged, and it will be in a separate step-down subsidiary, and the deal value can be anywhere between 750 and 850 crores. Maybe at a later point of time, Lupin might think to come with the IPO, or no, they might demerge this division. We need to watch out. KIMS has acquired 13.24% in Kondapura Healthcare for 20 crores. Now they own almost 19.86%. But it is a green field, so I don't think it will have any impact at the current point of time. There are many stocks which are looking very good. So Can Bank, is something in PSU Bank is doing very good. Can Union Bank, PNB, even Bank of Baroda. So we like smaller PSU banks which can do very good. Federal for one. Even when market is making an all-time high, broking companies are something to watch out for. We have ISET, we have Angel One, wealth management companies are there, 361 Wealth. These can do very good. Few PSU stocks have still value. So GAIL, NMDC, and HIL are few companies where value is still there. KPR Mills, Lemon Tree, LTI Mindtree, NHPC, Rolex Ring. Rolex Ring is something we cover, and I think with a lot of deals going through, Rolex Ring will be a major beneficiary. We still feel a lot of headroom in Rolex Ring. With that, over to you, team.
थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। सो फर्स्ट अपडेट आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर आरबीआई ने वाइड उसका जो लेटर डेट था सितंबर 11 में, उसमें अप्रूव किया है रीअपॉइंट करने को संदीप बख्शी सर को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ द बैंक, और ये इफेक्टिव होगा अक्टूबर 4 2023 से लेके अक्टूबर 3 2026 तक। ये एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड हुई थी अगस्त 13 2023 में, और उसमें शेयर होल्डर ने ऑलरेडी अप्रूव दे दिया था अपॉइंटमेंट करने के लिए। द नेक्स्ट अपडेट है स्टील सेक्टर के ऊपर। इंडिया ने इम्पोज किया एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइनीज स्टील में 5 इयर्स के लिए। ड्यूरिंग अप्रैल टू जुलाई में चाइना सेकंड बिगेस्ट स्टील एक्सपोर्टर था इंडिया में आफ्टर साउथ कोरिया। Selling कर रहा था 0.6 MNT up to 62% year on year. Now in all, India imported 2 MNT of finished steel in the period and highest since 2020, and up is at 23% from year earlier. The next update on रेलवे सेक्टर के ऊपर था। रेलवे स्टॉक्स जो है उसमें शार्प अप मूव देखी गई है हम लोगों ने लास्ट फ्यू डेज में। बेसिकली ये जो न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो बिटवीन होगा इंडिया एंड गल्फ यूरोपियन कंट्रीज में, जो रूट है वो डेवलप होगा अंडर लीडरशिप यूएस में, और जो फंडिंग होगा वो होगा G7 नेशंस के थ्रू। ये पॉजिटिविटी है वो स्ट्रॉन्ग है अमॉन्ग इंडियन रेलवे स्टॉक्स के लिए, और ये एड्रेसेबल है मार्केट्स एक्सपांड करने के लिए। ये प्रोजेक्ट्स है वो अवॉर्डेड होंगे बिडिंग बेसिस पे, और ये उसके लिए ईयर्स करंटली जो डीपीआर है वो वर्क कर रहा है। एज पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिलीज किया है कि 2 कॉरिडोर्स हो गए, और ये रेलवे एंड सी रूट होगा ट्रैक। ये ऑल्सो हाइड्रोजन पाइप्स भी के ट्रैक के थ्रू होगा, और ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क इलेक्ट्रिसिटी लाइंस भी होंगी। और ये जो एमओयू है ये साइन होगा, और 8 एंटिटीज के साथ जो ये एमओयू है उसकी जो मीट है नेक्स्ट 60 डेज में होंगी, जो बेसिकली डेवलपमेंट कमिट करेंगे एक्शन प्लान रिलेवेंट टाइम टेबल्स के अनुसार। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है रेलवे सेक्टर्स के लिए। द नेक्स्ट अपडेट है सीमेंट कंपनीज है ईस्ट इंडिया। उन्होंने अनाउंस किया प्राइस हाइक 35 रुपीज पर बैग, और ये स्टार्ट हो चुका है सितंबर 11 कल से। आफ्टर ये हाइक लेने के बाद सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक में नोमुरा ने नोट रिलीज किया था। और ईस्ट बेस्ड सीमेंट कंपनीज है उसमें नोवोको है एंड दालमिया भारत है, तो उनको ये बेनिफिशियरी होगा प्राइस हाइक। देन रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर अपडेट है। केकेआर है वो इन्वेस्ट करेंगी 2069.5 करोड़ कंपनी के सब्सिडरी रिलायंस रिटेल वेंचर्स में, और उनका जो स्टेक है वो इंक्रीज करेंगी 1.42 से 1 मतलब 1.2 प्रीवियसली 1.17 था, अभी वो स्टेक इंक्रीज हो चुका है 1.42%। और ये डील की जो वैल्यू है रिटेल जायंट की 8.36 लाख करोड़ है। नेक्स्ट अपडेट है लार्सन एंड टर्बो के ऊपर। एलएनटी के ऊपर कंपनी ने उनका जो बायबैक का प्राइस है वो इंक्रीज किया है। प्रीवियसली 3000 रुपीज था, अभी 3200 रुपीज किया है, और जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो भी रिड्यूस हो चुके हैं 3.33 करोड़ से 3.12 करोड़। द नेक्स्ट अपडेट है लुपिन के ऊपर। लुपिन ये जो कंपनी है वो प्लान कर रही है कि वो एंटर करेंगी बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट। उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है लुपिन मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन, बेसिकली ये क्रेव आउट ऑफ 2 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर करती है साइट ढासा एंड विशाखापट्टनम में। और उनका जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन है उसमें इंक्लूडिंग फर्मेंटेशन होता है लुपिन रिसर्च पार्क पुणे में। इसका जो कंसिडरेशन एक्सपेक्टेड है वो 750 से लेके 850 करोड़ का है, और ये डील है वो मोस्टली एंटर करेंगे अक्टूबर 2023 में। नेक्स्ट अपडेट है टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन के ऊपर। कंपनी के जो बोर्ड है उन्होंने अग्री किया है कि वो अक्वायर करेंगे इक्विटी शेयर्स 3 ऑफ द उनकी जो कंपनीज है होली ओन सब्सिडरीज, उसमें टीवीएस लॉजिस्टिक इन्वेस्टमेंट यूके है, टीवीएस लॉजिस्टिक इन्वेस्टमेंट यूएसए है, टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन लिमिटेड सिंगापुर है, और उसकी जो एग्रीगेट कॉस्ट है वो 450 करोड़ है, और जो टाइम पीरियड है कंप्लीशन इन्वेस्टमेंट का ओवरसीज सब्सिडरीज में वो नवंबर 30 का है। और ये रिपोर्ट किया है कि कंसोलिडेशन रेवेन्यू अराउंड 2342.43 करोड़ है, जो डाउन होगा 12.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग देखें। और नेट लॉस है
65.26 करोड़ का। देन हम लोग देखें तो मार्केट के ऊपर, तो मार्केट ने कल ऑल टाइम हाई किया है। तो जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है, तब जो एएमसी स्टॉक्स वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एएमसी स्टॉक में यूटीआईएमसी है, एचडीएफसी एमसी है, नाम इंडिया है, ये लेवल से अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो ये स्टॉक का वॉच आउट कर सकते हो। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक भी हम लोग को ये लेवल पे अच्छा लग रहा है, यहाँ से 10 to 15% का रिटर्न दे सकता है। लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनीज है उसमें एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रू है। जो अभी आईसीआईसीआई बैंक के जो संदीप बख्शी है उनको अपॉइंटमेंट किया है, वैसे ही जो प्रू के जो सीईओ है अनूप बख्शी, वो भी सीईओ है। तो ये कंटिन्यूटी रहेगी। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, ये स्टॉक को भी आप वॉच आउट कर सकते हो। देन आईटीआई है, उन्होंने कंप्यूटर वर्ल्ड में एक मार्क प्रेजेंट किया है। उन्होंने इंटेल के साथ कोलैबोरेशन करके एक कंप्यूटर न्यू लॉन्च किया है। इसके कारण कल अपर फ्रीज लगा था स्टॉक के ऊपर। ओवरऑल ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है पावर ग्रिड के ऊपर। कंपनी ने स्टैब्लिश किया इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट, जो है इवाक्यूएशन पावर आरईजी राजस्थान में 20 गीगावाट का है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है पावर ग्रिड के लिए। इसके अलावा जो पावर स्टॉक है, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, एनटीपीसी, ये स्टॉक पावर स्टॉक में अच्छे लगते हैं। टाटा पावर में यहाँ से भी अभी अपसाइड मूवमेंट मतलब मूव देख सकते हैं। तो ये आप स्टॉक को वॉच आउट कर सकते हो। द नेक्स्ट अपडेट है, जो भारत फोर्ज कंपनी है वो 10 to 12 कंट्रीज के साथ टॉक कर रही है डिफेंस रिलेटेड एक्सपोर्ट के लिए। तो ओवरऑल ये भारत फोर्ज के लिए अच्छा है। देन किम्स जो है, उन्होंने किम्स जो कंपनी है कृष्ण डायग्नोस्टिक, वो अक्वायर करने वाली है 13.24% स्टेक इन कोंडापुर हेल्थ केयर में अराउंड 20 करोड़ के लिए। अभी उनके पास 19.86% है, बट इसका कुछ इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। स्टॉक्स जो हम लोग को अभी अच्छे लग रहे हैं उसमें कैनरा बैंक है, पीएसयू में यूनियन बैंक है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनी है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, एंजल वन है, ये आप स्टॉक को देख सकते हो। पीएसयू स्टॉक में गेल जो जिसमें अभी भी मूव बाकी है, उसमें गेल है, एनएमडीसी है, एचएल है, वो वैल्यू अभी भी उसमें है। देन केपीआर मिल है, एलटीआई माइंड ट्री है, लेमन ट्री है, रोलेक्स रिंग्स एक अच्छा स्टॉक है जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं, तो उसमें मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है। तो रोलेक्स रिंग्स है, एनएचपीसी है, तो ये आप स्टॉक को वॉच आउट कर सकते हो। देन हिंडाल्को जो कंपनी है उन्होंने एक्सचेंज में फाइल किया है कि उनकी जो सब्सिडरी है नोवलीज, वो एंटर करेंगे करने वाली लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट सप्लाई एल्यूमिनियम बेवरेज का शीट्स का नॉर्थ अमेरिका बेस्ड जो बॉल कॉर्पोरेशन है अर्लियर 2023 में। देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उन्होंने कल अनाउंस किया कि वो जीक्यूजी पार्टनर्स करेंगे, जो अक्वायर करेंगे 15.7 मिलियन शेयर्स। एमडीएन सीईओ जो भी वैद्यनाथन है, उन्होंने वाया ब्लॉक डील से, और ये लेटर उन्होंने ये पार्ट यूज करेंगे डील का प्रोसीड सब्सक्राइब बैंक का जो फ्रेश शेयर है एक्सरसाइजिंग स्टॉक ऑप्शन के लिए। जो टाटा कंज्यूमर कंपनी है एफएमसीजी, वो प्लान करे कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का पैंट्री सेगमेंट में, जैसे कि पल्सेस है, उसमें स्पाइसेस है, स्टेपल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, एंड रेडी टू कुक फूड है। तो ये पॉजिटिव हो सकता है। देन बजाज फाइनेंस जो एनबीएफसी कंपनी है, वो प्लान कर रही है कि वो ऑफर करेंगी कार लोन्स, ट्रैक्टर, माइक्रो फाइनेंस लोन नेक्स्ट फ्यू इयर्स में, क्योंकि उनका जो ब्राइट ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है इंडियन क्रेडिट मार्केट में, ये अपडेट उनके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने दिया है। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड, थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग द मॉर्निंग कॉन कॉल, हैव अ नाइस डे।